xn, and one extra term is coming, so the number of terms become n. I'm taking e common minus 1. So class, remember axn coming, so class there is a term at 0, so it become due, so it become e a due xn, and one extra term is coming, so the number of terms become n. I'm taking e common minus 1. So class, remember axn minus 1 can be written as a due xn minus 1. So it's a very important formula. Fine. Plus another important thing in this part which they sometime give. Plus sometime they change the cost. Say I say terminal cost for terminal expense for term assurance is F, and pure endowment assurance is F dash. Now I have changed the cost. ये F है और ये F की जगह F dash है, दोनों अलग अलग हैं, राइट? तो क्लास ये आपको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा in present value as well as in EPV. So in EPV what I write, F A X dash N and F dash A X N dash. तो ये आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे हमने विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में और इंक्रीजिंग एश्योरेंस के अंदर देखा था. फाइन. और सिमिलर, तो इन ईपीवी व्हाट आई राइट, F A X dash N and F dash A X N dash. तो ये आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे हमने विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में और इंक्रीजिंग एश्योरेंस के अंदर देखा था. फाइन. और सिमिलरली क्लास प्रेजेंट वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, इफ के एक्स इज लेस देन एन वी राइट एफ वी के एक्स प्लस 1, राइट, एंड फॉर के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन एफ dash v raised to power n. So please take care on this stuff. Fine class, any problem? Now class, let's see how to calculate the gross premium. So class, हमने already देखा है inflow to calculate the price of any product. First we have done inflow is equal to outflow.
right? Then I told you the concept of present value come, so then we equated present value of inflow is equal to present value of outflow. But since here we don't know the, at what time the life will die, that is random, so that is why here we'll do expected present value of inflow is equal to expected present value of outflow, because there is randomness in the death of the life, right? So class, if we talk about inflow, the inflow for insurance company is what? Premium. And you have outflow. There are two outflows which we are having. One is expenses and seconds are your benefit. Fine. And when you're talking benefit, we say including bonuses. Including bonus. Right? So class, the formula for gross premium using equivalence relation is EPV of premium is equivalent to EPV of benefit plus EPV of expense. Fine. So class, this is my equivalence relation for your gross premium. A very, very important formula class. 100% there will be a question from 10 to 16 marks from this topic. Fine. So remember this formula. Now class, few things which you remember as important points in this. Class, remember premium is always paid in advance. प्लस ये लॉजिकल, आप ये मत, ये अजम्पशन है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है, ये मत सोचना कि भाई अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो आप ड्यू नहीं अरियर ले लें। आप प्रीमियम दोगे तभी आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी, अदरवाइज क्लास आपकी पॉलिसी स्टार्ट नहीं होगी। रिमेंबर दिस। सो प्रीमियम इज ऑलवेज पेड इन एडवांस, दिस इज बाय डिफॉल्ट अजम्पशन। सेकेंड, बाय डिफॉल्ट प्रीमियम is paid annually and according to the product. Now what is the meaning of this class? क्लास, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम, लाइक मेरा होल लाइफ एश्योरेंस है क्लास, इस होल लाइफ एश्योरेंस के लिए यू कैन पे सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का मतलब क्या है कि आप मुझे एक बार प्रीमियम दीजिए, उसके बाद आराम से डाई कीजिए, जो भी आपका बेनिफिट है आपके बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। एनुअल प्रीमियम फॉर होल लाइफ, यू कैन पे एनुअल प्रीमियम जब तक आप जिंदा हो, एनुअली पे कर रहे हो। यू कैन पे पीए3 प्रीमियम फॉर होल लाइफ, आप पीए3 पेमेंट भी कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास, आप टेम्परेरी प्रीमियम फॉर एनी ईयर्स भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको फुल ऑप्शंस देती है क्लास कि आप कोई भी प्लान इसमें से चूज कर सकते हैं एज योर प्रीमियम पेमेंट। बट क्लास बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट इज दिस। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, अगर होल लाइफ है तो क्लास हम एनुअल प्रीमियम पे करेंगे सबसे पहली बात, और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वी आर मेकिंग फॉर होल लाइफ। अगर सिमिलरली टर्म एश्योरेंस होता, भाई जब टर्म एश्योरेंस है ही एनी ईयर्स की, तो आप होल लाइफ प्रीमियम तो पे करोगे नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? आई एम सेइंग बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या मान के चलेंगे? एनुअल प्रीमियम टिल एन ईयर्स मैक्सिमम। इसके बाद आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे। सेम थिंग एंडोमेंट, सेम थिंग प्योर एंडोमेंट। अब क्लास अगर मान लो आपकी डेफर्ड एन्युटी है, क्लास आपने एक पॉलिसी खरीदी एक्स पर और एक्स प्लस एन से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो रहा है, एंड दीज आर माय एन्युटी बेनिफिट। तो क्लास इस सिनेरियो के अंदर आप सिर्फ डेफर्ड पीरियड में ही प्रीमियम एक्स प्लस एन से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो रहा है,
एंड दीज आर माय एन्युटी बेनिफिट। तो क्लास इस सिनेरियो के अंदर आप सिर्फ डेफर्ड पीरियड में ही प्रीमियम पे करोगे, यू विल नॉट पे फॉर होल लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि आप भी कंपनी को प्रीमियम दे रहे हो और कंपनी आपको उसी पॉइंट पे बेनिफिट्स भी दे रही है, एन्युटी बेनिफिट्स। क्यों? प्लस कंपनी आपसे प्रीमियम ले या फिर आपको बेनिफिट दे, दोनों ही सिनेरियो में कंपनी का एक्सपेंस होता है, तो डबल एक्सपेंस लगाने की जरूरत क्या है? इससे आपकी पॉलिसी की कॉस्ट ही तो इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा कभी सिनेरियो नहीं होगा। फाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? सो रिमेंबर दीज things whenever you are calculating the gross premium. Fine class. Now class, let's see one question from your study material. Or it says a life insurance company issue whole life assurance policy to life age 50 exact. Plus sum assured is 75,000 payable at the end of the year of death. Premium are payable annually in advance. हमें gross premium निकालना है. Bases are given. A very very important basis we have AM92 select class. So please remember that part. सो क्लास सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ईपीवी ऑफ प्रीमियम निकालना है, राइट? सो व्हाट इज माय ईपीवी ऑफ प्रीमियम क्लास? क्लास होल लाइफ एश्योरेंस है, प्रीमियम आर पेबल एनुअली इन एडवांस। उसने ये नहीं लिखा कितने टाइम तक, तो मैंने बाय डिफॉल्ट बोला था अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, दैट मीन्स यू आर पेइंग द प्रीमियम फॉर होल लाइफ एनुअली, राइट? सो क्लास माय पी इज ग्रॉस प्रीमियम, सो होल लाइफ एन्युटी इन एडवांस इज ए ड्यू 50। फाइन। 6% per annum के लिए please check page number 102 of actuarial table. So class, when you check the table, it is 14.051 P. Fine. Now class, next is EPV of benefit. So class, what is my EPV of benefit? Class, always remember you have to find benefit, expense and premium separately. एक ही लाइन में मत करना, usually student बहुत गड़बड़ करते हैं. We have a step marking, तो please show everything in one step, right? So EPV of benefit is what? Plus 75,000 benefit given, whole life assurance है, fine. Now class, next is EPV of benefit. So class, what is my EPV of benefit? Class, always remember you have to find benefit, expense and premium separately. एक ही लाइन में मत करना, usually student बहुत गड़बड़ करते हैं. We have a step marking, तो please show everything in one step, right? So EPV of benefit is what? Plus 75,000 benefit given, whole life assurance है, A, select annuity है, select 50, right? So please check the actuarial table, that is 75,000 into 0.20463. Fine. When you multiply this, you get 15,347.25. Fine class. Next is class EPV of expense. So we have to find EPV of expense. Now class, what are my expenses? Plus initial expense is 325. So initial expense I 325 plus we have initial commission also. Plus commission is also is considered as expense only. So 100% of annual gross premium. So one time लगेगा class, and 100% means what? One only. So P is my expense. So these are two my initial expense. Now class, we have renewal expense 75 per annum at the start. Consider plus initial expense is 325. So initial expense I 325 plus we have initial commission also. Plus commission is also is considered as expense only. So 100% of annual gross premium. So one time लगेगा class, and 100% means what? One only. So P is my expense. So these are two my initial expense. Now class, we have renewal expense 75 per annum at the start of second and subsequent policy year. This is what I was talking कि please class read the question carefully कि जो आपका renewal है E, वो आपका लेवल स्टार्टिंग टाइम 0 से हो रहा है या सेकंड ईयर से हो रहा है? तो इस केस में सेकंड ईयर से हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इन अरियर. तो क्लास प्लस 75 रुपीज ई, सॉरी नॉट ई, 75 इज माई ई, दैट इज अरियर है ए,
select 50. Right class? Then we have renewal commission also 2.5% each annual gross premium excluding the first. ये भी excluding the first है. So class 2.5% of premium और ये भी आपका arrear में ही आएगा. Right class? Or class to find the value of this, we know that what is that? A due minus 1. So A due x की value we have already calculated. Substitute here. So class, when you simplify this, you will get so class, when you simplify, you will get 1.32627.5p plus 1303.85. Fine. After simplification of this. Now class, by equivalence result, we can write EPV of premium is equivalent to EPV of expense plus EPV of benefit. Right? So हमारे पास values हैं class 14.051p is equivalent to we have expense as 1.326275p plus 1303.85 plus 15347.25. Right class? Now solve for p. You will get class the premium paid by the person. So this is coming out to be 1308.56 class when you solve this equation. Fine. Any problem class? So class, let's check one more question from your study material where it says calculate the annual premium payable in advance by life now age 32. So class, currently एक life है 32 years की, right? In respect of a deferred annuity payable from age 60. So class, from age 60 this life will get deferred benefit where 5 years certain and whole life thereafter. तो क्लास 5 years certain है, उसके बाद whole life है. The amount of annuity is 400 per annum payable annually in arrear. तो क्लास 60 से 65 तक 400 per annum certain मिलेगा और arrear में मिलेगा. और 65 पर अगर वो जिंदा है तो यहां से whole life. Age 60. So class, from age 60 this life will get deferred benefit where 5 years certain and whole life thereafter. तो क्लास 5 years certain है, उसके बाद whole life है. The amount of annuity is 400 per annum payable annually in arrear. तो क्लास 60 से 65 तक 400 per annum certain मिलेगा और arrear में मिलेगा. और 65 पर अगर वो जिंदा है तो यहां से whole life. तो क्लास, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है, ये एन्युटी को ट्रिगर करने के लिए द पर्सन मस्ट अलाइव एट एज 60. पर्सन मस्ट अलाइव एट 60. तो अगर पर्सन 60 पे अलाइव है क्लास, तो जो ये 5 बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो बंदा 62 पे डाई कर जाए. राइट? और 65 वाला, जो 65 के बाद वाले बेनिफिट है, अगर वो जिंदा है 65 तक, आफ्टर 65 जहां तक वो जिंदा है वहीं तक के आपको बेनिफिट मिलेंगे.
तो लिखा भी है द इंश्योरर इनकर्स एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ 2 व्हेन एन्युटी पेमेंट इज मेड। क्लास जब जब वो एन्युटी पेमेंट कर रहा है तो 2 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगेगा। द प्रीमियम पेड थ्रू आउट द डेफर्ड पीरियड, आप जो प्रीमियम पे करोगे वो सिर्फ डेफर्ड प्रीमियम पीरियड में करोगे, तो आप लास्ट प्रीमियम यू आर पेइंग एट 59, राइट। नाउ AM92 ultimate mortality 6% per annum is class given. So class first thing is what is my EPV of premium. तो EPV of premium क्या होगा क्लास? So class from age 32 to 60, for how long we are making a premium? We are making a premium for 28 years. So class TA due ultimate mortality है 32 and 28. Fine class. प्लस x प्लस n का सम 60 है, तो पेज नंबर आप 106 में देखेंगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, तो आपको इसमें होल माइनस डेफर करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास दिस इज कमिंग आउट टू बी 14.053 इफ यू चेक योर एक्चुअल टेबल। सो दिस इज माय ईपीवी ऑफ प्रीमियम क्लास। फाइन। नाउ क्लास नेक्स्ट ईपीवी ऑफ बेनिफिट एंड ईपीवी ऑफ एक्सपेंस क्लास में दोनों क्लब कर रहा हूं। इसके पीछे एक लॉजिक है। क्यों क्लास? सिर्फ एक ही एक्सपेंस हमें लग रहा है, वो कह रहा है जहां जहां आप 400 रुपीज पे करोगे वहां पर कंपनी का एक और आउटफ्लो हो रहा है 2 रुपीज। टू पे दिस एन्युटी आई हैव टू स्पेंड 2 रुपीज, तो कंपनी का टोटल आउटफ्लो कितना है 402। सो दैट इज आई एम क्लबिंग दिस टू। तो क्लास ये 402 का एक्सपेंस कब लगेगा? जब पर्सन 28 ईयर सर्वाइव करेगा। तो क्लास V28 28 P32। क्लास जब हम प्रेजेंट वैल्यू लिखते थे हम सिर्फ VN लिखते थे, जब हम ईपीवी लिखेंगे तो ध्यान रखना इट इज VN NPX, इस प्रेजेंट वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी भी अटैच होगी। सो 28 ईयर्स तक सर्वाइव करेगा तो क्लास 402 का कंपनी का एक्सपेंस होगा। अरियर है ए 5 ईयर, सर्टन है A5। फाइन। और मींस क्लास व्हाट? प्लस अगर 65 पर जिंदा रहा तो क्लास होल लाइफ देयर आफ्टर, तो क्लास यहां से डिस्काउंट बैक करेंगे, तो क्लास V33 P32 into 402 A65। Fine class, get the values of this. So class, when you solve this, so class this can be written as what? To get the value of this, it is A due 65 minus 1, and when you solve this you will get class 9.569, and when you simplify this completely class you will get 810.74। Fine. So class EPV of premium is equal to EPV of benefit and expense, right? So my P is equivalent to 57.69. So class another very good question from your study material. Fine. So class another very good question from your study material. इस क्वेश्चन के अंदर क्लास उसने टर्म एश्योरेंस एंड एन्युटी दोनों कंबाइन कर दी है। तो क्लास टर्म एश्योरेंस भी है और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो लाइफ एज 35, राइट। टर्म एश्योर स्टडी मटेरियल। फाइन। तो क्लास अनदर वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। इस क्वेश्चन के अंदर क्लास उसने टर्म एश्योरेंस एंड एन्युटी दोनों कंबाइन कर दी है। तो क्लास टर्म एश्योरेंस भी है और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो लाइफ एज 35, राइट। सो क्लास हमें करेंटली एक लाइफ एज 35 है, 65 तक वी हैव अ टर्म एश्योरेंस, और क्लास प्रीमियम भी वो इसी में पे कर रही है, और इसके लिए टेबल भी अलग है AM92 सेलेक्ट। अब दो टेबल यूज कर रहे हैं क्लास, कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी।
ध्यान रखना। और 65 के बाद वी आर यूजिंग पीएफए। फाइन क्लास 60 ऑन डेथ बिफोर ए 65 डेथ पेड बेनिफिट इज पेड इमीडिएटली, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म एश्योरेंस बेनिफिट इमीडिएटली है और बेनिफिट भी आपका डिक्रीजिंग बेनिफिट है क्लास। अगर आप देखोगे एवरी ईयर द बेनिफिट इज डिक्रीज बाय 5000। फाइन नो बेनिफिट इज पेबल ऑन डेथ आफ्टर एज 65। 65 के बाद कोई बेनिफिट नहीं है। ऑन अटेनिंग एज 65 लाइफ सर्वाइव होल लाइफ एन्युटी ऑफ 10,000 पेबल मंथली इन अरियर, यू विल गेट आफ्टर दैट अ एन्युटी बेनिफिट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन क्लास। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इनिशियल, रेगुलर एंड क्लेम। तो क्लास लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले क्लास आता है ईपीवी ऑफ प्रीमियम। तो क्लास ईपीवी ऑफ प्रीमियम विल बी व्हाट? वी हैव मंथली प्रीमियम, तो क्लास लेट पी बी द मंथली प्रीमियम। मैंने पी को मंथली प्रीमियम एज्यूम किया है। तो क्लास हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा? 12p, क्योंकि आगे वाला अमाउंट एनुअली आता है। ए ड्यू एडवांस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लास, सेलेक्ट, इन चीजों को ध्यान रखने वाली चीजें हैं क्लास। सेलेक्ट एज 35, 30 इयर्स मैक्सिमम प्रीमियम वी आर पेइंग एंड 12। क्लास ऑल दो सम इज 65 बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू यूज द टेबल, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्लास। 12p व्हाट? होल माइनस डेफर्ड। और क्लास AM92 यूज करना है। ए ड्यू 65, 12, राइट। यहां पर सिलेक्ट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लास 12p इसको हम क्या लिखेंगे? ए ड्यू सेलेक्ट 35 माइनस 11/24 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्लास D65, क्योंकि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। D सेलेक्ट 35, राइट, एंड दिस इज क्लास ए ड्यू 65 माइनस 11/24। फाइन क्लास। क्लास मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कई बुक्स में इसको रिकंबाइन करते हैं वो। क्लास ये वाली टर्म और ये वाली अगर मैं टर्म कंबाइन कर दूं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ए ड्यू 35, 30, इसकी वैल्यू वो देखेंगे डायरेक्टली टेबल से। अब एक टर्म ये बची और दिस इंटू दिस बचेगा, तो माइनस 11/24 अगर मैं कॉमन ले लूं तो इट इज 1 माइनस D65 डिवाइडेड बाय D सेलेक्ट 35। कईयों ने ऐसे भी लिखा होता है, तो आपके ऊपर चॉइस है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। फाइन, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना ये कहां से आया। दे हैव कंबाइंड दिस एंड दिस टर्म टू गेट दिस फर्स्ट टर्म। फाइन, तो क्लास चेक द वैल्यूज यूजिंग AM92। सो क्लास आपका ईपीवी ऑफ प्रीमियम क्या आएगा? क्लास व्हेन यू सिंप्लीफाई यू गेट क्लास 12p into 17.299p, sorry 17.299, sorry. Fine, so this is my EPV of premium class. Now class बात करते हैं EPV of benefit की। So class what is my EPV of benefit? क्लास 5,000 का आपका डिक्रीजिंग है, तो क्लास जितना भी डिक्रीज हो रहा है उतना पहले में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्लास वी गेट 2,05,000, राइट। ए बार सेलेक्ट 35-30, राइट, एंड क्लास इसमें से माइनस कर दीजिए क्लास माइनस 5,000 आई ए बार सेलेक्ट 35-30, राइट, प्लस क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है। 65 से क्लास हमें क्या मिलने वाली है? होल लाइफ एन्युटी 10,000 पर एनम पेबल मंथली इन एडवांस। तो क्लास ये एन्युटी मिलेगी कब? जब वो ये टाइम पीरियड क्या करेगा? ये 30 इयर्स क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, तभी मिलेगी। तो क्लास प्लस V30 30p35, राइट, ही सर्वाइव दिस। क्लास सेलेक्ट आएगा और क्लास ये जो आप वैल्यू देखेंगे ये वाली वैल्यू AM92 से आएगी, रिमेंबर, एंड इनटू 10,000 A 65-12, we need E35 select। तो क्लास सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू एज पॉइंट करेंगे। तो क्लास 788 एंड A65 सेलेक्ट। मंथली एन्युटी इन अरियर मिल रहा है। तो क्लास जो ये वाली वैल्यू आप निकालने वाले हैं
क्लास ये PFA टेबल से आएगी, ध्यान रखना, PFA 92C20. तो दिस इज व्हाट, A due 65 minus 1 plus 11/24. बट ये टेबल ध्यान रखना, ये गड़बड़ होती है बच्चों से, तो कोई निशानी लगा लेना यहां पर जब आप लिखने कि ये M92 से है, ये PFA से है। मैंने आपको पहले नंबर लाइन पे बताया। फाइन। Now class, one by one please find the value. So class, how to calculate A bar 35 dash 30? So first 1 plus I raised to power half, and then A select 35 minus D65 divided by D select 35 and A65. select का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फाइन। AM92 select है, 4% है, पेज नंबर 106, sorry, पेज नंबर 96, you have given all the values, check, and class when you simplify this you will get class 0.04788. class you will get 0.04788. fine class, any problem? now class similarly हम I A bar 35 I A bar select 35 dash 30. क्लास लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्लास फर्स्ट इसको कन्वर्ट करेंगे इमीडिएटली से एट द एंड, अगेन होल माइनस डेफर्ड, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला 4% है, 6 इट इज यू हैव बेनिफिट ऑफ एक्सपेंस क्लेम, तो इक्वल टू इनकट एक्स टिल राइट, जो आपका क्लास एड ड्यू एक्स है, सबसे पहले KPX ऑफ फ्रॉम 0 to ड्यू एक्स एट, right? So class A due x can be written as 1 plus EX to xn. A due x can in this formula divided पर 82 पे अगर आप देखेंगे AM92 के अंदर आपको इनकी वैल्यू गिवन है। लेट मी शो यू, सेलेक्ट वन 43 पॉइंट टेबल पेज नंबर 82 एंड 83, क्लियर? सो क्लास सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी विल गेट व्हाट, दिस इज 45 इनटू क्लास 29.175. Fine. So write down here 29.